Good evening, namaste, welcome everybody. I'm your host for the evening. I'm Tanu Sardana, and first of all, I would like to welcome each one of you here who's joined us on Aakash BYJU'S live CUCET webinar series with us. And yes, I would want to begin by saying thank you to each one of you who has given us a phenomenal response on our previous webinars. In fact, just in case if you've missed our previous webinars, feel free to go back. The link has been given in the description box. आप हमारे पुराने webinars भी देख सकते हैं, and you can get clarity about CUCET 2022. The whole idea is to bring clarity to students. जितने भी students CUCET के लिए इस साल prepare कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी clarity in webinars में wait कर रही है. If you've not registered, then this is the right moment. आप हमारे channel को भी subscribe कीजिए, and I would suggest click on the bell icon so that you get the latest updates about CUCET 2022. So I think without further ado, मैं आज का ये webinar definitely यहाँ पे start करना चाहूंगी by saying कि if you have right kind of guidance in life, then everything is achievable. और उसके लिए लगते हैं experts, उसके लिए लगते हैं mentors, उसके लिए लगते हैं ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा experienced होते हैं. So with me, we are joined here today by Mr. Vaibhav Dikshit. Now, a little brief about him. He is the Assistant Director in the National Academic Team at AESL. And Vaibhav sir has been a distinguished physics faculty with more than 8 years of experience in teaching physics and preparing and mentoring students for various competitive examinations also. And sir is also an alumnus of IIT Guwahati and a former visiting researcher at the University of Manchester, UK, and University of South Carolina, USA. So hi sir, a very warm welcome to you. How are you doing this evening? I'm very well, thank you, Tanu ma'am, and thank you again for having me in this webinar. And I look forward to having a very fruitful discussion with you on the very relevant topic of the CUCT. Like the previous webinars, जिनमें इतने relevant questions आए और इतना insight CUCT के बारे में हमें देने का मौका मिला. Right. I feel that we'll get the same opportunity in this as well. Absolutely, sir. So for all the students जिन्होंने अभी हमें join किया है, I would want to tell you कि आज के webinar के highlights क्या रहेंगे. हमारा exactly जो decision, the whole concept of our webinar is going to be around 3 months strategy, because right now every student is curious to strategize, planning कैसे करनी है. उन सब का discussion आज वैभव सर के साथ हम करने वाले हैं. In fact, wait for the subject wise tips and tricks जो directly experienced mentor से आपको मिलने वाली हैं. And most importantly, how are you going to manage CUCET and your board exams together? This is the most important thing right now for each and every student. तो उसके बारे में भी हम discussion करेंगे. And another thing, जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ डूज और डोंट्स होते हैं, उन पर भी हम बहुत सारी बातें यहाँ पे डेफिनेटली करने वाले हैं. सो सर, बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक यू आल्सो मेंशन कि हमने प्रीवियस वेबिनार्स में भी पूछे. दिस टाइम आल्सो स्टूडेंट्स वर वेरी क्यूरियस, सो वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दोबारा बोलना चाहूंगी कि इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी क्वेरी व्हिच इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड, आप हमारे चैट बॉक्स में हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं. आई एम गोइंग टू टेक दोस क्वेश्चंस और सीधे आपको एक्सपर्ट से यहाँ पे उसका आंसर मिलने वाला है. So without further ado, let's just start. I hope you guys are ready. Please throw your questions at us so that you can get the answers. So मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि हमने बात ही की है स्ट्रैटेजी की. So as we all know कि it might be conducted, CUCET एग्जाम जो है वो जून या जुलाई में कंडक्ट हो सकता है. तो स्टूडेंट्स के पास आई थिंक बहुत ही प्रेशियस टाइम है और बहुत ही लिमिटेड टाइम है. आई वुड से आई थिंक अराउंड 3 मंथ्स रहेंगे उनके पास. तो उनकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? So तनु मैम, जिन भी स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा है, तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट देम कि उन्होंने एक्चुअली इस बात को अप्रिशिएट किया that to prepare for any competitive examination, be it CUCET, the value of the time and strategizing your studies during that time is very important. बिल्कुल सही बात है that the time is very limited. Of course, the time is around let's say 3 months more or less, and we have to acknowledge this one fact as well कि इस duration में there are also class 12th board examinations as well which are coming. So 26th April से the notification of the CBSE is there, जहाँ पे 12th examinations are there. Of course there are other boards as well, but here primarily
I just mentioned the CBSE boards because a large chunk of students are there. While I'm speaking, I must also mention that the CUCET examination जो है वो केवल CBSE board students के लिए ही limited नहीं है. That is a pan India examination. किसी भी board का students उसको दे सकता है. तो पहले ही मैं let me give an advice to the students that do not get confused if at all मैं कभी CBSE को इस webinar के दौरान mention करूं. So this is the first thing. Now talking about the strategy, we have around 3 months of time. The students need to take the maximum benefit of this 3 months time, and that can only happen when they plan it perfectly. Now what do I mean by plan? Plan सबसे पहले मैम start होता है by understanding the paper which the student is trying or aiming to give. हर एक different paper के लिए अलग अलग strategy होती है. To give a glimpse, in CUCET, though they look less, but there are a total of 8 subjects in totality. Physics, chemistry, mathematics. Now there's biology, which can be divided into botany and zoology. So यहाँ पे 5 subjects हुए. Then there is mental ability, English, and general knowledge. And each and every subject demands a different strategy completely. आगे जाके हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और सब्जेक्ट वाइज हमारा किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दैट. बट इन द इनिशियल टाइम ऑफ दिस वेबिनार, लेट मी सम अप बाय सेइंग इट कि सबसे पहले द स्टूडेंट्स शुड इंश्योर दैट देयर सब्जेक्ट नॉलेज इज कंप्लीट. नाउ सब्जेक्ट नॉलेज कैसे कंप्लीट होनी है वो हम आगे जैसे बढ़ते रहेंगे डिस्कशन में विल इलैबोरेट ऑन दैट. बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी, इन सब की आपकी थियोरेटिकल नॉलेज, इन सब की टेक्स्ट बुक नॉलेज जो स्टैटिक पार्ट है वो कंप्लीटली अप टू डेट हो, आपको सब आता हो. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी शुड बी अटेम्प्ट एज मेनी mock tests and as many papers based on the actual CUCET pattern as possible. ताकि आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो भी सीखा है, you are able to apply that in the pattern of the CUCET. Now, as I'm talking about this, there comes a very important part. As I mentioned in the beginning, कि board examinations बीच में आ रहे हैं, and board examinations are very important. No one can deny that. Now, I'll give a tip to the students, and the tip is कि let's divide our preparation strategy into 2 parts. Before the board examination and after the board examination. Now, before the board examination, the student should identify those particular chapters of each subject which are common in CUCET syllabus as well as the board syllabus. So CUCET or board syllabus means there are many chapters which are common. For example, I can give an example of physics. There is dual nature of radiation and matter, ray optics, there is wave optics, there is semiconductors, and so on. In mathematics, there is vector, there is probability, there is integral calculus, chemical kinetics, for example, in the chemistry, and similarly for the biology. In sub chapters को the student should aim कि हम ये बोर्ड से पहले पढ़ ले. क्यों? इससे ऐसी बात होगी जैसे एक तीर से 2 निशाने. What does that mean? That means कि आप ना केवल CUCET की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर पा रहेंगे होगे, बट साथ साथ आप बोर्ड्स के जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे होंगे. After the board examination, I would advise the students to now catch up on those chapters which they couldn't do before the board examination and follow the same strategy. Theoretical knowledge को grasp करना, now उसको as many as possible mock tests में apply करके grasp को और strong करते चले जाना. तो अगर holistic picture और holistic philosophy अगर preparation के students के mind में clear होगी, so I think they'll be on the right track and they'll be able to get the maximum benefit out of these 3 months. That's very nice. I think when you move with clarity, तो आपके अंदर एक right confidence भी आता है कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. So sir, like you mentioned कि अगर मैं specifically CUCET for Science UG courses की बात करूं, it's divided into 2 parts. Part A and B, जिसमें पहले मैं Part A के बारे में बात करना चाहूंगी. If students are very very much interested, they would want to know कि हम topic wise कैसे prepare कर सकते हैं Part A के लिए. Ma'am, similarly,
जैसे इस वेबिनार में क्वेश्चन आया है, वी हैव बीन गेटिंग कांस्टेंट एंड मेनी क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट द पार्ट ए. पार्ट ए विच इज इन इटसेल्फ इन टोटलिटी, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन बोलते हैं CUCET का, in itself contains three subjects. Okay. One is the numerical ability and logical reasoning, जिसको कई बार mental ability भी कहा जाता है. Then there is English, and the last one is the general knowledge. Now, for each of these three subjects, this strategy is a little different, but the main challenge is कि इसका एक perfectly defined syllabus होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. I'll tell you the reason why. General knowledge also includes questions on current affairs. Now, दिन पे दिन जैसे समय बढ़ता चला जाता है, the bundle of current affairs बढ़ता ही चला जाता है. True. Now it is very important and very critical to identify कि कौन कौन से current affairs जो हमारे आसपास हो रहे हैं, जो न्यूज में आ रहे हैं, are important from the point of view of the examination. And as I mentioned in the previous webinar as well, जब ज्यादा information होती है, when there is a myriad of information, it is very easy to get lost. This information overload is the actual killer of the preparation of the students. Now, talking about the topics in each of these three subjects, I cannot actually comment on what topics or what textbook the student should read, because as and when I see the textbooks available in the market, and when I discuss with the experts of those subjects, एक ही conclusion सामने आता है that these textbooks, more than leading the students to the CUCET, they are misleading them away from the CUCET. Wow. And this is because आपको mental ability की बहुत books मिलेंगी, English की बहुत मिलेंगी, general knowledge की बहुत मिलेंगी, लेकिन mental ability for CUCET, English for CUCET and general knowledge for CUCET की books नहीं है. So for these three subjects, I can proudly say, and when I have sat with the experts and seen that we at Aakash BYJU'S have themselves developed the study packages for all these three subjects, aimed specifically targeting the CUCET Paper 1 UG Science course, I can say that the student should follow such textbooks as study materials, solve each and every question in them, and then proceed. Students should avoid कि वो अपने ही मन से कुछ assumptions लेके एक certain topics को मान ले कि जरूरी है और उनको कहीं से भी पढ़ना चालू कर दे. ये तीन subjects easy हैं, लेकिन साथ साथ इनमें बहुत बड़ा danger है mislead होने का. उस danger से बचना ज्यादा जरूरी है उसके easiness को appreciate करने से. So that is one thing that the student should keep in mind. I think I can't agree more, sir, because too much of information actually misleads you, distracts you from the right path. But thank God we have Aakash BYJU'S here. So like you said, कि अभी specific topics पे बात नहीं की जा सकती. So if I talk about part B, you know, and share करें आप उसको topic wise, तो उसके लिए क्या advice रहेगी for students? So मैं part B, मैं फिर से एक बार students को mention करना चाहूँगा. Part B is composed of physics, chemistry, biology जिसमें botany and zoology होता है, and then there is mathematics. Now these four subjects, ये चारों के चारों poles apart से, इन सब की strategy completely different होती है. How to approach them, how to make sure that you have a 100% command on these subjects. The strategy required is completely different. I'll start with physics. Okay. One reason being I am a physics faculty myself, so I can relate many personal experiences and the interactions that I have had with many students. Now, when it comes to physics is a very interesting mix of theory and numericals. जितने ज़्यादा physics में numericals हैं, उतनी ही at least theory है. Now for the physics, the students should not rush towards solving the numericals. Students मैंने कई बार देखा है, वो ये करना चाहते हैं कि as soon as they open the books of physics, they rush towards the numericals, कि theory जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और numericals को हम solve करने की एक जल्दी है. This is a completely wrong strategy. जब भी आप theory पढ़ें, make sure that your aim should be that when you read the theory, you should be able to have 100% command on that theory. अगर उस theory से कोई theoretical question आए, then you should be 100% confident कि आप उसको
perfectly correct attempt कर देंगे. Now, when you cross this first step, कि आपने थ्योरी को समझ लिया, थ्योरी में डेरिवेशंस को समझ लिया, जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके perfectly clear hai. Now move to the next step. Now the next step is to solve the numericals based on that theory. Now, as this is a webinar series, a lot of answers of the questions I can relate with the previous webinar as well. And why? Because in the previous webinar, we stressed on the fact that the questions are important, but equally important is the relevancy of those questions. आप arbitrarily कहीं से भी कोई भी question अगर physics का करने लग जाएंगे, वो आपका पर्पस सर्व नहीं करेगा. सो माय एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज दैट अटेम्प्ट relevant questions as per the demand of that entrance examinations. डिमांड जो कि उस क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड करेगी. जब आप as many as possible न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स में आपके डाउट आएंगे, क्लियर दोस डाउट्स विद द फैकल्टी दैट यू आर एसोसिएटेड विद, एंड इसी प्रोसेस में फिजिक्स को आगे बढ़ना चाहिए. जब आप इस प्रोसेस में बढ़ेंगे, then you will automatically see कि फिजिक्स में आपका ग्रास्प ज्यादा बढ़ जाएगा. Now when I'm talking about the physics, there is one more advice. फिजिक्स का सिलेबस स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इनिशियली दिख सकता है कि ये तो बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, इतने सारे कैसे कर पाएंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द chapters of motion that we call as kinematics till the end, which is the modern physics, semiconductors, atoms, nuclei, and so on and so on. The advice to the students is कि physics को modules या फिर groups में divide कीजिए. The first module will be mechanics, which will involve the chapter of motion, laws of motion, work, energy, power, the system of particles and rotational motion. Then there is gravitation. Now the next module will be mechanics 2, which will involve your fluid mechanics, the mechanics of solids, the simple harmonic motion, the waves, and so on and so on. Now in similar 12, there will be electromagnetism containing electrostatics, the magnetism, the electromagnetic induction, and in the last part will be modern physics. So broadly 4 या 5 मॉड्यूल से ज्यादा फिजिक्स नहीं होगी. आप मॉड्यूल्स में डिवाइड कीजिए, टाइम सेट कीजिए कि मुझे इतने ड्यूरेशन में एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना है, एंड स्टिक टू इट, फॉलो इट डिलिजेंटली, डेडिकेटेडली, तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी. And that is what we have seen in the students. We have counseled many students and we have seen students who thought initially कि physics बहुत difficult है, and as and when the time progressed, we saw कि उनके physics में जो marks थे, they were very brilliant marks, commendable marks. Now when it comes to chemistry, chemistry is a subject which again I can say is a mix of 3 broad sections: physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. Physical chemistry contains numericals. Now, to more or less extent, this strategy should be similar. The student should understand the theory, then solve the numericals as much as possible. For organic chemistry, the student should remember the reactions, but he should be clear about the mechanisms of that reaction as well. So the student should not straightforward move towards just remembering these reactions, because it would not be sufficient for the examination. Examination में हल्का सा भी twist करके question आया तो आप भूल जाएंगे, और CUCET में नेगेटिव मार्किंग है. गलत क्वेश्चन आपको 0 नहीं -1 मार्क्स देता है. Now for the inorganic chemistry, there are a lot of trends across the periodic table. The students should make short notes of these trends, pinpoint and highlight the exceptions, because many a times it is from these exceptions that the questions are framed. Talking about the biology, biology is a subject wherein the theoretical part is comparatively heavy, and this subject demands that you revisit your textbook again and again to revise as much as possible. So when talking about the biology, the student should not be hesitant कि मैं, उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बार अगर टेक्स्ट बुक पढ़ ली तो मुझे दोबारा नहीं पढ़नी. आपको बार बार पढ़नी होगी, आप भूलेंगे. The science says कि what you read today, only the 10% of that you retain tomorrow. Now how to increase that retention? The way to increase that retention is continuous revision, again and again revision, and as much revision as possible. Talking about the mathematics, mathematics is a numerical heavy subject. Of course there is theory. No numerical can be solved without theory. But in mathematics, the student should do quality questions, relevant questions,
do not neglect the theory. I am again emphasizing on that. And as then when the student does more and more questions, the grasp on mathematics increases as well. So this is a broad picture of all the subjects. Of course, हर एक स्टूडेंट की अपने वीक एरियाज अलग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट इज डिफरेंट, और इसीलिए हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ऑन द ग्राउंड लेवल माइट चेंज. बट दिस ब्रॉड पिक्चर और ये ब्रॉड जो स्ट्रक्चर है, ये स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करने में आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल. Okay, sir, actually बहुत सारे questions यहाँ पे आ रहे हैं, and this clearly shows that people are so excited about CUCET. Plus, I would say that there is confusion too. So उसी confusion को resolve करने के लिए Vaibhav sir is with us. So there's this person Saurav Kumar. तो थोड़ा सा digress होना चाहते हैं topic से, because we were discussing about science UG course, but Saurav Kumar का question है, please tell about non-science UG course. Okay. तो सौरभ, आपके लिए एंड अदर स्टूडेंट्स, नॉन साइंस यूजी कोर्स का मतलब होता है, यूजी मींस अंडर ग्रेजुएट विच आर बैचलर कोर्सेज, एंड नॉन साइंस आर दोज कोर्सेज जिसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव एग्जांपल्स. बीए कोर्सेज, फॉर एग्जांपल बीए लैंग्वेजेस, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री, and so on and so on, BA political science. All these courses are called non-science UG courses. Now, for non-science UG courses in the CUCET, the paper that has to be given is paper 2. It contains 100 questions which are all of mental ability, English and GK. Now, at Aakash BYJU'S, in the crash course that we are offering, we are teaching for science UG undergraduate courses paper. However, मैं ये बोलना चाहूंगा, we are not ignoring the students जो कि non science UG courses में जाना चाहते हैं. We are providing students free of cost, जो कि हमारे crash course को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद free of cost हम उन्हें non science UG course का जो पेपर होता है उस पे based 6 complimentary mock test भी provide करेंगे. So that is about the non science UG courses. Okay, so I hope Saurav आपको clarity मिली होगी about non-science UG courses. Sir, Motivation Fire wants to know कि GK को कैसे master किया जा सकता है, because the stress was given on general knowledge. So give your best strategy. So सारे students in fact यही जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी strategy है जिससे GK को decode किया जा सके. So ma'am, there is no strategy which is called the best strategy. Let me first of all say that. However, the most successful strategy जो होती है वो जरूर मैं आपको बता सकता हूँ. हाँ, as I always say with the strategy part, strategy हमेशा personal होती है. हर एक students की situations अलग है. different situations में हर एक strategy नहीं apply हो सकती. One shoe does not fit all. Now, if I talk about the general strategy or the broad strategy जो students को follow करनी चाहिए वो GK में, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एग्जाम को अगर अप्रोच करना चाह रहे हैं, सबसे पहले समझ लें कि वो एग्जाम या फिर वो सब्जेक्ट में है क्या. भाई, दुश्मन से अगर लड़ाई होगी तो पहले दुश्मन को समझ लीजिए कि दुश्मन कितना पावरफुल है, देन ओनली अप्रोच फॉर द वॉर. नाउ, जनरल नॉलेज इज बेस्ड ऑन 2 parts. One is what I call the static part, and one is what I call the current affairs. Now, the static part involves, let's say, for example, history, economics, political science, geography, and the current affairs parts, which is constantly evolving each and every second, each and every day, each and every month, are those part or that part which is based on the happenings around us. Let's say, for example, 2 or 3 days before, the Russia invaded Ukraine, and that becomes the part of the current affairs. Right. However, the history part, let's say the medieval history of India, that is the part which is not changing, that is there. So the static part and the current affairs part. For the static part, the books are there. The student should read the books, revise them constantly. It is mostly a theoretical part where there are chances of forgetting
and these chances are very high. तो continuous and constant revision in parts का बहुत जरूरी है. Make short notes. जब ज्यादा थ्योरी होगी तो short notes बनाएं उन आपके static part के. Now for the current affairs, ma'am, as I said, current affairs constantly evolve कर रहे हैं, and ऐसा बोलना स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके से नाइंसाफी होगी if I say कि आप CUCT के लिए साइंस कोर्सेज भी पढ़ें, आप मेंटल एबिलिटी जीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, आप बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करें, और साथ साथ रोज सुबह शाम न्यूज भी देखें और उसमें आइडेंटिफाई भी करें कि व्हाट न्यूज इज necessary or important for the examination point of view. So that would be too much to ask from the students. So for the current affairs, I would recommend the students attempt quality questions from a renowned test series, which will provide you the revision, which will provide you the idea of the current happenings around them, and also read the textbooks based on the current affairs. We ourselves have also prepared a thorough, as I said before, a thorough study package based on the general knowledge part as well, and the mock tests that we'll be creating in our various courses of CUCT, that is the CUCT crash course, the test and discussion series as well. There'll be questions of the current affairs as well. So our own experts are continuously going through all the current affairs, identifying which current affairs are important for the CUCT and putting them in the question paper. So that is one thing to approach. However, the general idea should be like any other human being, किसी भी इंसान की तरह स्टूडेंट्स को अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए, and he should be aware about the happenings around him or her, and that will take care of the current affairs part there. वो एक यूपीएससी एग्जामिनेशन जितनी हैवी करंट अफेयर्स जरूरी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स है तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहेगी. करेक्ट. सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बाहर की दुनिया के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है. कीप अ चेक, एंड या ऑफ कोर्स न्यूज़ डेफिनेटली हेल्प्स. सर काफी कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे रंजीत. सो रंजीत, वी हैव वेबिनार फॉर यू ओनली सो दैट हर कंफ्यूजन दूर हो जाए. He says कि I am so confused about CUCT. Make it clear that is this paper okay. I think he's very confused. तो वो ये लिख रहे हैं कि should 12th student give this exam? Biology student can also is also eligible for this exam. So ma'am, not just for the student, for all the students, let me just give a brief idea and a brief intro of what the CUCT is all about. CUCT है क्या? Why it is such talk of the town? हर जगह देखे तो CUCT का ही चर्चा है. Correct. So to clarify, CUCT एक ऐसा एग्जामिनेशन है which in the full form is known as Central Universities Common Entrance Test. हमारे इंडिया में there are currently more than 50 central universities which are governed by our central government. Act of Parliament से ये universities बनाई जाती हैं. Now since 2016, a lot of central universities in various states अपने अंडरग्रेजुएट साइंस एंड नॉन साइंस कोर्सेज में CUCT के एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशंस लेती रही है. The student had to give the CUCT examination, get the score, get the rank, and then approach the universities to get the admission into them. लेकिन 2022 सेशन से एक बहुत बड़ा मैसिव इवेंट हुआ. And what is this massive event? A mammoth university, which is the Delhi University itself, joined the ambit of the CUCT. तो इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट साइंस और नॉन साइंस कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को CUCT देना पड़ेगा. एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं, अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल BSc फिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है तो पहले आप CUCT एग्जामिनेशन दीजिए और उसका मार्क्स कंसिडर होगा. इसको मिस मत करिए. Now not just Delhi University, many other universities like for example Jawaharlal Nehru University in Delhi is also a part of CUCT, and more of such universities are expected to join, like for example Banaras Hindu University, which is in itself a very big university, Vishwa Bharati University, so on and so on. Now since so many important universities are taking admission in the critical undergraduate science and non-science courses through the CUCT, तो ये examination automatically बहुत important हो जाता है. अब important ना केवल कोर्सेज की वजह से, बट इसीलिए भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे. एटलीस्ट उतने तो करेंगे ही करेंगे जो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने की विश या एम रखते हैं.
तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन भी मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगी. तो दिस इज CUCT. नाउ who all students can give CUCT? Students who passed 12th this year, or who have already passed 12th last year, or are actually 12th pass, can give CUCT. There is no limit on the number of attempts that the student can give for the CUCT. जब भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में या फिर इनफैक्ट आई मस्ट से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, जब आप स्टूडेंट्स जो हैं अंडर ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद आपका शायद एम बने कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, तो भी आपको CUCT ही देना पड़ेगा. नोटिफिकेशंस एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन के. जब नोटिफिकेशन आएगा, आकाश बायजूस की तरफ से भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी. आप तब CUCT का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिए, CUCT के लिए थॉरली प्रिपेयर करिए, एस करिए, एडमिशन पाइए अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में, अपनी डिजायरेबल कोर्स में. सो दिस इज अबाउट द CUCT इन टोटलिटी, एंड दैट इज व्हाई it is a topic which is so much talked about these days. Right. So I hope clarity on CUCT is there among students, क्योंकि बहुत सारे students सर ये भी जानना चाहते हैं कि if I appear in this examination CUCT 2022 appear करने के बाद मुझे advantage क्या मिलेगा? What are the benefits associated with CUCT? Ma'am, if I talk about the CUCT examination only, तो as I said, CUCT examination एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन जाएगा. It is not an option, it is a necessity if you wish to take admission into the various courses in the central universities. And when I talk about the central university, central universities in themselves are very renowned universities. Now to clear of the confusion, I must say कि ये केवल अंडर ग्रेजुएट साइंस एंड नॉन साइंस कोर्सेज के लिए होगा. इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशंस जैसे पहले होते थे जेईई के थ्रू, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, वैसे ही होंगे. MBBS यानी मेडिकल करियर के एग्जामिनेशंस आपके नीट यूजी के थ्रू ही होंगे. जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, हाउएवर BSc, BA एंड सो ऑन मेनी कोर्सेज, मेनी वोकेशनल कोर्सेज एज वेल, आपका अब CUCT का आपका अटेम्प्ट डिमांड करेंगे. सो नॉट जस्ट एडवांटेज, इट इज अ प्रीरिक्विजिट, एक इनिशियल जरूरत है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, इनिशियल क्राइटेरिया है आपको जो फुलफिल करना पड़ेगा. एंड आई मस्ट एडवाइज द स्टूडेंट्स, दिस विल बी नॉट गुड. अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा भी लगेगा अगर आप यूनिवर्सिटी के पास एडमिशन के लिए जाएं आफ्टर बोर्ड्स एंड तब आपको पता चले कि CUCT मुझे देना जरूरी था, और क्योंकि मैंने CUCT अटेम्प्ट नहीं किया, आई डू नॉट हैव द स्कोर ऑफ द CUCT, सो आई कैन नॉट टेक द एडमिशन फॉर दैट. एंड दैट इज वन ऑफ दोज रीजंस कि हम लगातार एवरी वीकेंड ऑन सैटरडे वी आर होल्डिंग दिस वेबिनार, स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए अबाउट द CUCT एग्जामिनेशन. राइट. सो सर ये जान लिया व्हाट एग्जैक्टली CUCT और किस तरीके से वो डिवाइडेड है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, टेंटेटिव डेट भी पता कर ली. बट कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि वो स्टडी मटेरियल क्या रेफर करें स्टूडेंट्स, जो CUCT स्पेशली साइंस UG की प्रिपरेशन के लिए फिलहाल वेट कर रहे हैं सुनने के लिए. मैम, as I said, it all depends on the strategy. अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, till the time you are preparing for the board examinations, and you are concentrating on those chapters which are common between the CUCT and the board examination, then I advise the students to follow the NCERT till then. Now there is a catch. I know that there is a huge chunk of the students जो कि CBSE को belong नहीं करता, and of course वो NCERT को भी follow नहीं करते होंगे. So my advice to those students is read the textbooks that have been recommended to them for their board examination before the board exam. Now after the board examination, or in fact before that as well, there is one thing I need to advise to the students is, and some of the students might be thinking ki we are saying it again and again. The reason I'm saying it again and again is that it is extremely important. Do not do so much more than the requirement that you get lost. Remember that less is more. Relevancy of the study material and the relevancy of the questions that you do is extremely important. Like for example, we also have created the study material that we'll be providing for this CUCT crash course. As till now I have gone through multiple resources that are available in the market, and
for the benefit of the students, and as with as much confidence as possible, I can surely say that the study material that we have created is one of those study materials which surpasses the relevancy of any other study material that is available in the market. पहली बात तो CUCT के लिए study material है ही नहीं, because it is in this year that it is getting so famous, and with the ample questions itself. So what I'll suggest to the students is get hold of the study materials that we at Aakash BYJU'S have created, and one way to do it is get enrolled in our crash course. महंगा नहीं है, it is very cheap for the students benefit. We have kept the fee of the crash course very low, and they themselves will be surprised when they'll see the fees themselves. So now that you've mentioned about the crash course, so I'm sure students would want to know कि exactly CUCET batches Aakash में start कब से हो रहे हैं, so that they can enroll, and they would also want to know. Second part of my question would be कि कौन-कौन से courses offer किए जा रहे हैं for CUCET preparation. Yes, ma'am. So I'll start by answering the second part of the question first, then I'll move to the first part. कौन सी offerings हैं जो Aakash BYJU'S students को दे रहा है? So there are 3 offerings. The first offering is the crash course. Now crash course क्या होगा? Crash course will be a course जहां पे हम students को teach करेंगे. Faculties will be engaged, our experts will be engaged in teaching the students. Now these teaching sessions will not be recorded sessions, these will be live sessions which will happen in the online mode. और Aakash BYJU'S ने previous अपने COVID time से prove किया है that the level and the quality of the online education infrastructure that we have, the tools that we have, surpass anyone. So initially, talking about the crash course, there's teaching sessions, live teaching sessions, wherein we'll be completing the syllabus of part A and part B both, the subjects as well as mental ability, English and GK. So the student who asked about the strategy of the GK, that is something he should be aware about. In the GK, we'll be covering all the relevant topics that will be coming in the CUCET. जो CUCET में आने वाला है वो सब cover किया जाएगा. Now apart from teaching, there will be periodic tests. हम जो test लेंगे, they are of 2 types. Part syllabus test, जो कि as the syllabus goes on in the teaching classes, accordingly हम part syllabus test लेंगे. After each test, the student will be given a detailed error analysis report. कौन से टॉपिक्स में वो वीक है, कौन से टॉपिक्स उसने गलत अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन वो सही अटेम्प्ट कर रहा है, कंप्लीट डिटेल फॉर हिम टू एनालाइज. And there'll be full syllabus test based on the actual CUCET pattern as well. Now apart from that, in this crash course only, we'll be providing 6 free of cost mock tests for the non-science paper of the CUCET as well. To mention again, this crash course will be based on the syllabus of the CUCET paper for science UG courses, that is paper 1. Now the second offering is the test series offering, where the students will be given a proper schedule where they have to attempt the tests of the CUCET based on the actual pattern, based on the actual syllabus, and after each test they'll be given a detailed solution report and an error analysis report for the students to analyze themselves. And the last part is test and discussion series, wherein there will be tests, but along with them there will be discussions as well based on those tests for the students who join that. So हमारी faculties, हमारे experts students के साथ उनके doubts clear करेंगे, make sure करेंगे, ensure करेंगे अगले test में किसी ना किसी तरीके से उनकी performance enhance हो, improve हो. So this is broadly the 3 offerings. Now coming to the first part of your question, that when are these courses starting? So talking about the CUCET crash course, the crash course आने ही वाला है. 11th of March से we are launching the course for the first batch of the students, wherein for the benefit of the students what we have done is कि हम boards examination जो कि 26th of अपने अप्रैल से है, उससे पहले हम केवल वही चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करेंगे जो CUCET और क्रैश कोर्स में कॉमन है. एंड साथ साथ विल बी प्रोवाइडिंग देम complementary mock tests based on the boards pattern so that the students feel confident for the boards as well. Now after the boards, we'll again come back and complete those particular chapters जो हमने board से पहले नहीं किए. And there'll be
revision sessions. There'll be again mock tests, part syllabus tests for the benefit of the students. So 11th of March is the starting date of the first batch of the CUCT crash course. So जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही ज्यादा कम कंफ्यूजन होगा, उतनी ही कम चिंता होगी स्ट्रेटेजी की, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं they'll be automatically solved. Yeah, absolutely, sir. So 11th March is the date जिस पे आपको नजर बनाए रखनी है. And if you want any further information on this, you can always visit our website, which is aakash.ac.in. ये एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत सारे आंसर्स आपको पहुंचाने वाली है. सो सर, क्योंकि हमने कोर्सेज के बारे में बात कर ही ली और डेट भी यहाँ पे अनाउंस कर दी है दैट 11th मार्च से जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं कोर्सेज, तो कोई एडमिशन प्रोसेस भी रहेगा टू एनरोल इन आकाश फॉर साइंस यूजी कोर्सेज? Yes, ma'am. So the admission is something that we have made very simple for the students. All they need to do is they need to visit our website, that is aakash.ac.in, that is AAKASH.ac.in, and therein they can get all the information and the registration forms and the registration link. They can just enter the details, pay the registration amount, and they'll be automatically enrolled. And we'll take it up from there. We'll contact them and make them join our batches in as smooth manner as possible. So that is something. Also, while they're visiting our website, there's one more thing. We have, for the benefit of the students, created a free of cost sample mock test for them, a sample paper for the CUCET 2022. The student can, at this very moment, वो जा सकते हैं हमारे website पे and they can download this paper and see the pattern, the actual pattern of the CUCT paper, and understand that as well. So यहाँ पे aakash.ac.in पे आप लॉगिन करके सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं अराउंड CUCET 2022. In fact, I would suggest you कि for each and every latest update, you can also subscribe to our channel. और हमारे webinars, जो previous webinars है, वहाँ पे भी बहुत सारे questions वैभव सर ने resolve किए हैं. You can always go back to those webinars and find your answers. But आप हमारे साथ questions share कर ही रहे हैं. We are loving your excitement here. There's in fact one question, sir, जो मेरे दिमाग में भी आ रहा था, because board exams भी हैं, CUCET भी है, तो कभी कभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है पूरा एक्सपीरियंस टू प्रिपेयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स. प्लस अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी जो हैं वो कंडक्ट करेंगी, तो और भी इम्पोर्टेंट हो रहा है फॉर एवरी स्टूडेंट. तो मैं एज ए स्टूडेंट, मेरा अगर एक आइडियल रूटीन होना चाहिए तो वो कैसा दिखेगा? मैम, जब हम आइडियल रूटीन की बात करते हैं, सो एक आइडियल चीज वही होती है जो हर एक चीज का ख्याल रखे. So the same goes for the routine as well. An ideal routine, if I talk about, has multiple aspects. For example, the student, before sleeping the previous day, that is something that I've seen with the students that they do. They must make the plan for the next day. They must know what they are actually going to do in the next day. वरना अगला दिन केवल मूड पे डिपेंड करता है. सुबह जो मूड हुआ उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं. एंड अगर ऐसा नहीं करा तो कुछ चीजें एज अ साइड इफेक्ट आती हैं. वन ऑफ देम बीइंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स. आई हैव सीन दिस स्ट्रेस दैट इज इंक्रीजिंग इन द स्टूडेंट्स डे बाय डे. सो आपके रूटीन में, आइडियल रूटीन में, आपका एक हेल्दी अमाउंट ऑफ एम्पल स्लीप बहुत जरूरी है. खुद को स्लीप डिप्रिवेशन में मत डालिए. माइंड वैसे ही कम रिटेन करता है. इट विल स्टार्ट रिटेनिंग लेस एंड लेस एज यू स्लीप लेस एंड लेस. नाउ also include some healthy amount of recreational activity. कभी आपने पेरेंट्स से बात कीजिए, talk to your friends, go out for a walk. When I talk about the healthy amount of recreational activity, I mean to say कि लिमिट में होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप दिन के 10 घंटे फ्रेंड से बात करें और 2 घंटे पढ़ के सोचें कि आज तो मैंने बहुत अच्छा रिक्रिएशन कर लिया. So that is something that the student should keep in mind. Healthy amount of recreational activity, healthy amount of sleep. अब जो आपका टाइम है, you will feel very energetic. Now on this energetic time, your day should be divided into 2 parts. One is the subject preparation part, wherein आप subject की theory को understand करेंगे, subject के based questions करेंगे, और वो subject vary कर सकते हैं as per your requirement and as per the weak and the strong area of yours. जो आपके weak और strong areas है, उसमें आपको हो सकता है किसी को कम समय देना पड़े, किसी को ज्यादा देना पड़े. Now after this particular phase of your day, जहां पे आपने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया, every day I recommend the students to attempt
a mock test based on the CUCET pattern. पेपर को अटेम्प्ट करना कभी भी ना मिस करें. डेली नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट जितना भी हो पाए उतना जरूर करें, क्योंकि मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट से ही आप जान पाएंगे कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आप अप्लाई कर सकते हैं. और उसकी एप्लीकेशन में जब समय की एक लिमिटेशन होती है, बिकॉज CUCET इज जस्ट फॉर 120 मिनट्स, सो 120 मिनट्स में क्या आप वो एप्लीकेशन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर भी पा रहे हैं या नहीं. I have seen a lot of students जिनको I have seen that they are able to solve very good questions. However, in the examinations, they do not get marks because they are unable to solve those questions in the given amount of time. So the mock test आप attempt कीजिए. Mock test में आपका as frequently as possible attempt कीजिए. और mock test के attempt करने के पहले आप रिलैक्स रहिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट रहा उस पे थॉट प्रोसेस दीजिए. कौन कौन से क्वेश्चन सही करे, कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे, और जो क्वेश्चन सही करे वो भी क्या जल्दी सही किए जा सकते थे, और जो क्वेश्चन गलत किए वो गलत क्यों हुए, क्या हम थ्योरी भूल गए, क्या हमने फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया, और अगले मॉक टेस्ट में उन गलतियों को ना दोहराएं. डू नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ वन मॉक टेस्ट इन द अदर. So इस तरीके से each and every day by this very structured routine you will be able to progress and get closer and closer to the CUCET. So and also I must reemphasize again the analysis of the mock test is very important. So मुझे ऐसा लग रहा है सर मैं भी CUCET के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ and I'm loving the advice here. So recreational activities पे जरूर ध्यान दीजिए because थोड़ा बहुत break life में definitely लेना चाहिए so that you can always get back with lot of excitement and energy for your studies. दूसरा मॉक टेस्ट सर ने बोला है कि उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस दीजिए. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आई एम गोइंग टू टेक दिस होम. व्हाट इज योर टेक अवे? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. आप हमें बताइए व्हाट एग्जैक्टली आर यू लर्निंग विद दिस वेबिनार. इनफैक्ट सर यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है बट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. सो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप हमारे प्रीवियस वेबिनार्स को भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब सर ने दिया है. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रतीक कुमार वर्मा जानना चाहते हैं, विल देयर बी एनी वेटेज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स इन DU? So ma'am, as of now the notification on that is yet to come. अभी उसका notification आना है. एक बात को जो हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोर्ड एग्जामिनेशन वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो कट ऑफ जाती थी डिफरेंट कॉलेजेस की, दैट वाज व्हेन एडमिशन यूज्ड टू हैपन एट द टॉक ऑफ द टाउन. इतनी हाई कट ऑफ जाती थी. हाउएवर CUCET आ गया है. CUCET के एग्जामिनेशन के मार्क्स विल कम इनटू पिक्चर और इंपॉर्टेंट होंगे. नाउ ये देखना अभी बाकी है कि केवल CUCET के एग्जामिनेशन के मार्क्स विल बी इंपॉर्टेंट और द दिल्ली यूनिवर्सिटी विल कंसीडर द बोर्ड मार्क्स एज वेल. So as I'm again saying, boards are also important. Neglect ना करें, दोनों को साथ लेके चलें. That is possible. Kajal Dubey wants to know, क्या सारी central universities are the part of CUCET? So Kajal, as of now, there are more than 14 universities, and in fact, शायद ये webinar खत्म होने तक बढ़ भी जाएं. But it is highly expected. Reports भी ये कह रही हैं. UGC जो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, उनका भी ये प्रपोजल है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को CUCET में ले आया जाए. सो दैट इज हाईली एक्सपेक्टेड एंड इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. और जो मैंने आपसे सर पहले भी बोला था कि इस वेबिनार में मैं आपसे डूज एंड डोंट्स जरूर जानना चाहूंगी. सो यू नो बिफोर रैपिंग अप दिस सेशन, आई एम श्योर स्टूडेंट्स वुड वांट टू नो कि ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बहुत ही नेचुरल हैं होना, हाउ यू कैन अवॉइड. सो आपके हिसाब से यू नो कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, वो डूज और डोंट्स क्या रहेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CUCET? सो मैम, एक जो गलती मैंने ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स में देखी है, हालांकि गलतियां तो बहुत सारी होती हैं, बट देयर इज वन दिस वेरी मिस्टेक जो मैं स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं होता हुआ. वन आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर कि गेटिंग लॉस्ट इन द मिराज ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की और हमें लगता है हम सब कर लें, वी वांट टू डू एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. सो रेलेवेंसी रखना बहुत जरूरी होता है. तो दैट इज वन डूज, आई वुड से, मेंटेन रेलेवेंसी. एंड द सेकंड थिंग इज what I'll suggest the students to don't do. I would suggest कि आप जो भी mock test attempt करें CUCET का, after the mock test, ये मत सोचे कि इस mock test का काम खत्म हो गया. Do not think that the mock test is done with.
As I'm talking about the mock test, there is a very important strategy I like to mention to the students. After every mock test, try to mark those two questions जो आपने सही किए. The students should mark the questions which they have attempted correct and then mark those questions which they have attempted incorrect. Now all the questions they have attempted correct, उनको दो categories में divide कीजिए. One is the sure category, one is the guess category. That is कौन से question थे जिसके बारे में आप completely sure थे और वो आप correct attempt कर पाए, और किन questions के बारे में आपने guess work किया और वो सही हो गया. Similarly for the incorrect attempt questions, guess और sure, कौन श्योरिटी से आपने अटेम्प्ट किया था लेकिन गलत हो गया, और गेस किया और गलत हो गया. नाउ द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी इज श्योर एंड रॉन्ग. आप श्योरिटी से आपने अटेम्प्ट किया लेकिन वो गलत हो गया. नाउ ऐसे क्वेश्चंस के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, बिकॉज ये इतने डेंजरस होते हैं कि स्टूडेंट श्योरिटीज को टिक करते हैं और कभी रिवाइज नहीं करते आफ्टर एंड ऑफ द एग्जामिनेशन. और बेस्ट इज द श्योरिटी एंड करेक्ट. आपने श्योरली अटेम्प्ट किया और करेक्ट भी हुआ, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो आफ्टर एवरी टेस्ट एनालाइज कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके डेंजर कैटेगरी में है और किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गुड या फिर सेफ कैटेगरी में है, एंड ट्राई टू शिफ्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द डेंजर टू द सेफ कैटेगरी. तो दिस इज समथिंग अ मिक्स ऑफ डूज एंड डोंट जो स्टूडेंट को हर टेस्ट के बाद करना चाहिए. एंड अगेन अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी which is the theme of this webinar, I would suggest that to the students to do, and I think they'll be, if they'll be following this, they'll be able to bell the CUCET. Absolutely, sir. We are hoping the same. So, this brings us to the end of today's session, sir. It was a beautiful session. So much of information, so much of clarity. I'm sure students will agree with me कि बहुत सारी चीजें हमें आज के सेशन में जानने को मिली. कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम शायद कर सकते हैं. इनफैक्ट 11th March is the most important date for every student who's preparing for CUCET 2022. So thank you so much, Vaibhav sir. आज आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया. We are very thankful to you. Thank you so much, Tanu ma'am, and I thank all the students and the viewers जिन्होंने who are taking so much interest in the webinars and sending us the question. And हमें allow कर रहे हैं that we are sharing this information with all the students who are our viewers. Thank you once again. Yes, absolutely. We are very, very excited. जितने भी students हमें join करते हैं, thank you so much. In fact, there's another webinar waiting for you next Saturday. उसके लिए अभी तक अगर आपने register नहीं किया, then this is the right moment. Tell your friends and family members that this is the most important thing about 2022. And yes, keep sending us our questions. हम सारे questions यहाँ पे आपके लेने वाले हैं. And if you need any sort of information, you can always visit our website. It is aakash.ac.in. And वहां पे भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं. डू साइन फॉर आवर नेक्स्ट वेबिनार. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहां पे आपको उसका रजिस्टर करने का लिंक जरूर मेंशन हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु हैज जॉइंड अस टुडे. एंड यस, आई शैल सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट द सेम टाइम. आई विल सी यू एट 4 o'clock. Goodbye, everyone.